welcome back to Foxy. My name is Pooja and I'm a freelance makeup and beauty expert. Coronavirus has taught the entire world how to adapt to change quickly and rapidly. So in today's video, we're going to be talking about measures as to how we can prepare ourselves for post the lockdown. So कुछ precautions हमें लेने पड़ेंगे अपने साथ because even though coronavirus will be on a decline, but we need to take precautions because this virus gets spread from one person to another. So I think सबसे पहला और important point है कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलेंगे आप मास्क पहनेंगे. आपके पास N95 है, so that's good enough. Otherwise, we can use these disposable masks that we have, or we can make a lot of masks at home with a cloth or any clean cloth available at home. So आजकल काफ़ी DIY videos चल रहे हैं how to make your own mask, so maybe आप वो देख सकते हैं. Also, अगर आप disposable mask use कर रहे हैं, then you have to make sure that once you wear the mask, you must sanitize your hands. Once you take off the mask, you must throw it in a place or in a dustbin which has a little lid, or if it doesn't have a lid, then the dustbin should at least be a little far off. And obviously mask उतारने के बाद आप फिर से एक बार अपने हाथ धोएंगे. Second step and a very important step is that जहाँ भी आप जाएंगे, you have to make sure कि आप regular intervals पे अपने हाथ धो रहे हैं. It's always good to have a bottle of a sanitizer, small sanitizer in your pocket and or in your bag, but always remember that washing hands is a real formula compared to sanitizing them. So अगर washing hands का option नहीं है तो आप definitely hands को sanitize करिए. Third option is that जब भी आप अपने घर से बाहर जाएंगे आप try करिए कि आप full कपड़े पहन के जाएं, so that कोई भी आपका बॉडी पार्ट एक्सपोज ना हो और इस वायरस को अपॉर्चुनिटी ना मिले कि वो कहीं भी बैठ सके. सो अपने आप को पूरा ढकना, पूरा अच्छे से कवर करके बाहर जाना बहुत बहुत ज़रूरी है. सो फुल स्लीव्स कपड़ों के साथ साथ आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं अगर आपको बाहर जाना है. सो आप अननेसेसरली कोई चीज़ें मत टच करिए. अगर आप करते हैं, सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव gloves in your hands. You can use any kind of gloves. I use surgical gloves whenever I go out for essential shoppings, or you can use plastic gloves which are disposable. So totally जो भी आपके लिए available है आप वो use करिए. Also आप जब अपने हाथ sanitize करते हैं, then you must make sure that you use the sanitizer at the back of the hand also, which is very very important. नहीं तो मैं देखती हूँ कि लोग बस ऐसे sanitize करके छोड़ देते हैं, but back area को भी sanitize करना ज़रूरी है. उसके बाद जो भी आपकी belongings हैं जो घर से आपके साथ जाती हैं, especially your mobile phone which is with you 24/7, you must sanitize it 2 times in a day. And आप मोबाइल फ़ोन को कैसे सैनिटाइज करेंगे? आप इसके ऊपर डायरेक्टली सैनिटाइजर नहीं डालेंगे. आप अपने हाथ से सैनिटाइजर को, आप हाथ में सैनिटाइजर को लेंगे और उससे मोबाइल फ़ोन को रब करेंगे. पहले स्क्रीन वाला एरिया और फिर पीछे जो आपका स्पीकर वाला एरिया है, एंड यू विल जस्ट नेचुरली लेट इट ड्राई. उसके बाद जो भी चीज़ें आपके साथ बाहर जाती हैं, जैसे आपका लैपटॉप बैग हो गया या कोई भी और आपका बैग है, आपका लंच बॉक्स है या कुछ है, देन यू मस्ट मेक श्योर कि आप जब उसको वापस लेके आते हैं आप उसको भी सैनिटाइज करके लेके आते हैं. सो also for some time the public transport is not going to be available, right? So हम अपनी गाड़ियाँ ही बाहर निकालेंगे, हम अपने ट्रांसपोर्ट पे ही डिपेंडेंट होंगे, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे. सो इन दैट केस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपका स्टीयरिंग व्हील एरिया है या जो भी आपका गियर बॉक्स है या डैशबोर्ड है, दैट शुड ऑल बी सैनिटाइज्ड एवरी डे. ओके, सो इट्स गुड टू कीप अ स्मॉल बॉटल ऑफ सैनिटाइजर इन योर कार एज वेल. और बाहर जाके भी try to maintain that social distancing. Try to have secluded places even at your workspaces. I'm sure your companies are already going to provide you with such facilities, but अपनी तरफ से भी let's take a chance. Also जब हम lift पे जा रहे हैं, let's not try to touch the button. Let's try to use the elbow to actually press any button or maybe open any door. Let's try to avoid touching any metal surfaces as much as possible, or at least sanitize quickly after touching them. Also आप जब अपने घर से बाहर जाते हैं, you make sure that आपके जो शूज़ का पैर है वो बाहर जाने वाला एक सेपरेट हो और घर में रहने वाला सेपरेट हो. So basically जो जूते पहन के आप बाहर अपने ऑफिस जाएंगे, उन जूतों को आप घर पे मत लाइए, आप उनको घर के बाहर ही छोड़ दीजिए. बिकॉज
अंदर वायरस या जर्म्स आने के चांसेस होते हैं. सो इट्स बेटर कि आप बाहर के जूतों को अलग से रखिए. उसके बाद जैसे ही आप घर वापस आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर यू मीट योर फैमिली members and also if you have little kids at home, it's always good that you first take a shower and clean yourself completely before you meet your family members. So as soon as you come inside the house, the first thing you need to do is that you need to shower and clean yourself first and also change your clothes. आप रोज अपने कपड़े जो भी आप पहन के बाहर जा रहे हैं उनको धोने में डालिए. It's always good because बाहर से जो भी viruses हमारे कपड़ों पे सेटल होते हैं, then you know chances of them coming in the house reduces. Also, please wear fresh clothes every day. It is very very important to take care of personal hygiene. So guys, remember that the war against coronavirus is still on and we will have to take a lot of personal precautions for it to not spread further. We all have to be united in this effort to make India and the world free from COVID-19. आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. एंड फॉर मोर सच कंटेंट यू कैन लॉग ऑन टू Foxy. In fact, there are a lot of videos here that talk about hygiene, in the times of lockdown and coronavirus, or how to make your DIY mask. So for more such content, log on to Foxy. If you don't have the app, please download it now. Till then, stay fab, stay Foxy.